Hello, dear student. Once again, very good evening to all of you, and welcome to our live answer writing session. So here today we are going to write a 15 marker question regarding what we have discussed in the previous class. So this today question that we are going to write is, to what extent has the goods and service tax succeed in realizing vision of one nation, one tax, one market discuss. So you will get 15 marks. So you have to write in 3 pages and the time I'll give you 15 minutes. Okay. If you are in initial phase, so it's supposed to write in 11 minutes, but I'm giving you 15 minutes so that you can write a good answer. Okay. So आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. जैसे ही हो जाएगा मुझे बता दीजिए, मैं टाइम स्टार्ट कर दूंगा. आई थिंक क्वेश्चन तो सामने है, क्या नोट डाउन करें, ये तो आपके सामने रहेगी. स्टार्ट कर लो. जरूरत नहीं नोट डाउन करने का, बिकॉज क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. और इफ यू वांट यू कैन राइट द क्वेश्चन आल्सो. Just give me 1 minute. First, I'll collect all this copy to a single PDF, and in that, we're going to evaluate. To what extent goods and service tax succeed in realizing the vision of one nation, one tax? Okay, very good. So 101 should be written very clearly. Okay. So Amendment Act 16 refer to the indirect taxes, refer to the indirect tax, taxes goods and service tax. Okay, which is helping succeeding this policy of Indian governance. So you can say it is helpful in subsuming or replacing all the indirect taxes with single taxes. ऐसे आप लिख सकते हो. 101 Constitutional Amendment Act help in subsuming all multiple indirect taxes into single indirect taxes. So that is the reason it can called it a revolutionary taxation reform since 1991. आप ऐसे start कर सकते हो. So GST is one of the revolutionary tax reform since 1991. It was introduced by 101st Constitutional Amendment Act. आप ये लिख सकते हो. That is also good. I'm saying it can be better also. Okay. So achievement of GST, you have to put that in box. Creation of common national market. Yes. So abolition of the different tax burden, interstate tax burden reduce. Example, you can give it possible. You bill, or you can say cascading effect, reduce the cascading effect. The word are very important. So uniform tax structure all. Okay. Reduce cascading. Okay. You have written here. Very good. Very good. 18% fix. Very good. Good example also. And higher revenue collection by GST every year. So higher revenue collection. If you can add the average revenue collection, you can say average revenue is around 2 lakh crore. So almost like you can say 2 trillion per month. ये क्या है? Per month. Per month. Okay. So next is I think you have to add more points here, because this is what core demand है. Because the question is about what extent. What extent means there are something positive and something negative. So to what extent? So that means you have to discuss about lot of positive point. What are the positive point about the GST? Then you have to discuss about the negative points as well. So good points. But add more. Okay. Demerits, one size fit all. Okay. Different tax slab. Yes. You can say that lot of essential item are on the higher tax bracket. Alcohol and spectrum. Yes, alcohol and petrol are outside. So good points. Federal burden, states express concern regarding. Very good. Then compliance burden is increasing. Small trader. Yes. Very good. India has. Okay. So I think you have 4 points. Okay, but it is a 15 marker question. So देखो, whenever you are talking about extent of GST, so that means you have to talk about positive, then you have to talk about negative. So it is 15 marker. So you have to add way forward also ना, 15 marker तो way forward add करना पड़ेगा. Okay, so one nation, one tax, one market by reducing cascading effect and imposing indirect tax on all sides with approach. This is very good. देखो, you cannot write like देखो, India has vision of one nation, one tax, one market by
avoiding the cascading effect and improving indirect tax for all size fit all. This is थोड़ा negative होती है ना. So at least at the end we can say that no doubt the GST is having problem, but it is better than the earlier system because earlier system is quite regressive, lot of cascading effect. You can say that yes, it is a good state, but you need to reform it. Okay. So ये वाला मत लिखना लास्ट में, थोड़ा सा नेगेटिव कन्वे करता है पॉइंट्स ना. अच्छा आप नहीं लिखे ना. हाँ दोनों आपको इम्प्रूव चाहिए. ठीक है, तो आपने वे फॉरवर्ड भी मिसिंग कर लिया. वे फॉरवर्ड होना चाहिए था एंड इट शुड बी रिटन ऑन द 3 पेज, क्योंकि ये 15 मार्कर का है, 3 पेज में आपको लिखना है. सो एज फॉर यूपीएससी स्टैंडर्ड्स आई एम गिविंग यू मार्क्स. अगर आप यहाँ देखोगे सो 15 मार्क्स का था. दिस इज व्हाट फॉर एज फॉर यूपीएससी स्टैंडर्ड. ओके, हियर यू कैन ऐड. ठीक है, वे फॉरवर्ड ऐड मोर पॉइंट्स. एंड वन मोर थिंग रिमेंबर, वेन एवर इट इज सेइंग दैट, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट. What extent? Extent का मतलब you have to write the positive, you have to write the negative, and whenever you are writing negative, you cannot end your answer with a negative tone. So you have to add the way forward, but way forward is not asking here. So here you can write way forward. कैसे तरह आप लिख सकते हैं way forward? You can write way forward like this, like this, like this. Single words is also valid, because this is not the core demand, but whenever we are saying about challenges problem, generally we give the way forward because it is not asking, but we have to give it. Okay, चलिए. So GST via 101 first constitutional amendment act aimed at fiscal market landscape by subsuming various indirect taxes and afford the this part. What is that? वन मार्केट. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. आपका हैंडराइटिंग बड़ा अच्छा है यार, एकदम मेरा टाइपिंग की तरफ लग रहा है. जैसे होती है ना एक कोट में, क्या उसको बोलते हैं बाबा, ये मैं मार्जिन क्यों काट रहे हो? मैं लिखूंगा कहाँ, मुझे बताओ. मार्जिन कभी नहीं काटना है, शुड बी लाइक दैट. इवन ये साइड भी मार्जिन होना चाहिए प्रॉपर. ठीक है, मार्जिन मत काटना कभी ना. मैं लिखूंगा कहाँ? गुड इंट्रो. अच्छा 15 मार्कर है, बट कीप इट शॉर्ट, क्योंकि इतना बड़े मौका नहीं मिलेगा. यू नो, डू नॉट गेट द टाइम एंड स्पेस टू राइट दिस मच. ओके, चलो. तो यू हैव टू पुट दैट इन बॉक्स. So tax simplifications eliminated the cascading effects of the tax they are creating separate supply chain. Yes, this is good. So increase best and collections. Yes. So give example. कितना collection हुआ है ना? 2 lakh crore per month. Like reduce the compliance burden. Yes, because it is a self compliance tax, because to get input tax credit you have to file your, you have to maintain all records. So people are maintaining their own record. So increasing state share and participation, they promoted federalism. ठीक है. सो पॉइंट्स कुछ को लिखो बाबा, ये इसको पॉइंट्स आप 4 पॉइंट अंदर लिखो मार्जिन के अंदर. ये 5th पॉइंट है, इंक्रीजिंग स्टेट शेयर एंड पार्टिसिपेशन. यस, यू कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. क्या लिख सकते हो उसको? कोऑपरेटिव. This is a classic example of cooperative federalism. Challenges and gaps. What are the challenges and gaps? So they inverted duty structure. Yes, this is also persist. So input are taxed higher than. Very good example अगर if possible. हाँ, टेक्सटाइल एंड भी बाबा, इसको लिखो स्पेशली. अच्छा अच्छा, स्पेशली लिखे, पर जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल्स. वर्ड कम हो जाएगा लेकिन आपका पॉइंट कन्वे हो जाएगा. एक्सेसिव बोस. एक्सेसिव का व्हाट इज दैट? Sir, base. बेस. Yes. वे डिफरेंट. categorization of goods and service.
मैंने लार्ज एट, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा क्लियरली देखो, मतलब आई थिंक ये आपने जो स्कैन किया उसमें थोड़ा सा यूज हो रहा है। ठीक है, सो जैसे मालाबार, पट्टा, tax, final good or not. Okay, okay. There are controversy, whether it is to be tax or not. Yes, yes. Clarity needed. So, complex in filing. Filing of what? Complex in filing of the income tax return. थोड़ा डिटेल में लिखो. Small business. अच्छा, complex of, you can write that, you can say difficult in maintaining compliance also. Complex in filing of income tax, और इसको लिखो यहाँ पे. Complex in filing small business and MSME faces issue during filing. देखो थोड़ा सा, देखो आप देखो सेंटेंस थोड़ा सा खड़खड़ है, मतलब स्मूथ नहीं है. You can say small business face the challenge of compliance burden because they have to maintain all these records. ठीक है. So assign, assign asymmetric federal, okay, asymmetric fiscal federalism, this is also good. So many states argue that they has reduced their share age tax levied on the finished final, acha, final. Okay, okay, I think yes, you have written very good points. So first, tax simplifications, increasing base collections, okay, reduce compliance burden, increasing state share. Okay, then challenges में एक एक करके आपने लिखे. Very good, very good. हाँ, so way forward addressing the inverted duty structure via ऑटोमेटेड, ये व्हाट इज दैट. देखो थोड़े से, देखो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना बाबा. देखो Yes, sir. कोई इतना एफर्ट नहीं देगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इवालुएटर का कोई आपसे पढ़ के इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसा मिलती है वो करेगा, तो इसीलिए वो भी पढ़ेगा नहीं आपका कॉपी बना, थोड़े से आपको ही लिखना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? वो आज मतलब बहुत दिन के बाद लिख रही हूँ ना, थोड़ा सा ओके, कोई टाइम बात नहीं, कोई मैनेजमेंट बात नहीं. इशू हुआ व्हाट इज तो दिस, व्हाट इज दिस? Automated. ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड प्रोविजनल बेस्ट एक्सपेंशन एंड increase essential item under the zero tax. Yes, this is also good. So simple, isko you can simple write expanding the GST coverage and bringing more essential goods under zero tax rate. So technological upgradation by enhancing uh, IT network. ठीक है, इसको पॉइंट्स लिखो, इसको थोड़ा सा पॉइंट्स लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है ना, ये एरो फेरो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है. और सामने वाला को भी लगता है यू हैव रिटन सो मेनी पॉइंट्स, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाता है मार्क्स में ना. सो इंक्रीज दी व्हाट इज दैट, वोटिंग स्ट्रेंथ वोटिंग वेटेज स्टेट्स टू स्टेट्स. यस, यस, दिस इज ऑल्सो गुड. सो जीएसटी, जीएसटी जीएसटी फ्रेम्स, फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क, जीएसटी फ्रेमवर्क. मैंने बोला ना, देखो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग टू वर्ड्स एंड एंडिंग टू वर्ड शुड बी क्लियर. तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखे ना, बीच का जो भी लिखोगे चलेगा. जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखता हूँ, ये होना चाहिए, बीच में कुछ लिखूं समझ में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो ऐसे हमेशा मेंटेन करना. सो इन दी फिजिकल लैंडस्केप बाय सिंप्लीफिकेशन इंक्रीजिंग व्हाट इज दैट, शेयर. अच्छा, शेयर एंड हाउएवर इशू टेक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर. देखो जरूरत नहीं, आप आई थिंक ऑलरेडी यू हैव रिटन दिस ऑल दिस इशू ना, वे फॉरवर्ड. सो already if you have written all these things, so conclusion can be very 2 to 3 line, not more than that. इतने में आप conclusion लिख सकते हो. देखो ऑलरेडी आपने inverted duty structure की बात की है, then in way forward you have also talked about that, so no need to repeat that. Okay, so you can just Yes, write your conclusion, just 3 to 4 lines, and just explain that no doubt this is a revolutionary reform. By implementing above suggestion, it is going to bring a lot of revenue buoyancy and helpful for achieving some task. You can say developed India by 2047 SDG goal, जो भी आप बताना बता सकते हो. Or you can say this is a good step in the right direction for promoting cooperative federalism, provided that we need to implement the above reform. Small crispy 2-3 lines में आपको लिखना है. ठीक है, ओके सर. but you have written everything in 15 minutes. Excellent. मतलब this is good, very good. थैंक यू सर. नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब to write this much content in a 15 minutes, it's a really. अब 4 पेज लिख लिए ना, 3 पेज में लिखना था. फिर सर वो ठीक थोड़ा है, सा हैंडराइटिंग की वजह से मैं समझ रहा हूँ, बट वो मिलेगा नहीं एग्जाम में. एग्जाम में आपको मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से कटेगा मार्क्स. मैं लास्ट पेज में जो है मेरे लिए वो इनवैलिड है. ठीक है, लास्ट पेज में वट एवर यू हैव रिटन, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर मी.
सो ओके आई विल चेक ओनली 3 पेज। नहीं, मैं कर नहीं सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो क्योंकि एग्जाम में आपको 4 पेज मिलेगा ही नहीं, तो 3 पेज में जो लिखोगे मैं उसका ही इवैल्यूएट करूंगा। मैं पढ़ लिया, बट उसका मार्क्स आपको उस हिसाब से मिलेगा। ओके सर। ठीक है, वी हैव मिस्ड द वे फॉरवर्ड। ठीक है, हम्म, हाँ जी सर। ठीक है, अच्छे